probably it dances too much, so they put the name as the Bolero. So the perception is Bullet, Bolero, Jeep, Safari, that I am either estate manager or I have come for inspection. मतलब ये एक फॉल्ट है जब आप बोलेरो या MM540 या मेजर anything that the government used or used to have back in the day or users now you use, ये प्रॉब्लम होता है. ओरिजिनल वो छोटा वाला भी थार ही था. हाँ, अब so- modify किया उसको. हाँ, तो मेजर कमांडर तो मेजर डिसकंटिन्यू करके they made Thar टर्बो, नो नॉन टर्बो. देन थार का वो DI डिसकंटिन्यू करके they made this new Thar. तो 40s in 1941 I forgot 57 or whenever Mahindra and Mahindra got permission for, I mean, took license from Willys to mass produce their Jeep. Jeep name is basically, if you look at the Jeep platform, it is two-seater, back is flat, front is short. It was a general purpose. The actual name of Jeep is GP, General Purpose Vehicle. You want to build ambulance, you want to build water tank, you want to build ice cream carrier, anything that platform will support. So the actual name was General Purpose Vehicle. That became Jeep. People kept saying GP, 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 it became Jeep. Then Willys patented the name JEEP. Then they gave, many people they gave permissions. In India, Mahindra and Mahindra got the license. From there, Mahindra and Mahindra tractor and I mean tractor was always like their bread and butter. Jeeps became the go-to vehicle across country. Because at that time we did not have road infrastructure. So we wanted a vehicle which will last. That is why you still see 1970, 1960 Jeep still running. They cannot be broken. मार्शल मुझे याद नहीं थे, पर कमांडर Commander, तो Marshal, Major, Max. हम तो ये येलागिरी गए थे, उस बंदे के पास कौन सा था? जो पीछे बैठने का था, ब्लू वाला जो था ना, वो उसमें लेके जा रहा था बाइसन कौन? हाँ, that is MM540. The model is Mahindra 540 DP. It can be obtained either in Major or Commander variant. वो था ना Armada. There was one vehicle called Armada. So that is what became Bolero. So Mahindra Armada became, I think, Festival or something. They put a stupid name. So basically anything with long body and multiple seating, Mahindra will give a funny name. They used to give good names, but now I don't know what happened. For festival, Max Festival. ये सुना हुआ है. हाँ, वो मतलब जहाँ पे भी आपको लोग ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत है ना, यू विल फाइंड मैक्स फेस्टिवल, टेम्पो, फोर्स का ट्रैक्स. ये दो गाड़ी आपको मिल जाएगा, स्पेशली महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, दैट एरिया. तूफान भी तो फोर्स में है ना? हाँ, फोर्स तूफान, ऐसे खतरनाक नाम है ऐसे. देयर आर मेनी व्हीकल्स विद दिस. बोलेरो का क्या मतलब? Bolero is a form of a Spanish dance. I don't know why they named this vehicle Bolero. Probably it dances too much, so they put the name as the Bolero. बहुत ज़्यादा बॉडी रोल है ना इसमें, मतलब SUV मोनो क्या बोलते हैं,
चैसी ऑन लैडर में इट्स फिजिक्स, बॉडी रोल तो होगा ही. आई डोंट नो व्हाई दे गेव दिस काइंड ऑफ लुकिंग दिस अ व्हीकल व्हिच लुक्स लाइक दिस द नेम बोलेरो. बोलेरो इन्वेडर मस्त था, 4x4 2-सीटर 4-सीटर ऑप्शन था उसमें और बैक ओपन. ओह क्या गाड़ी थी वो. मैं वो देख के मेरे को लगा कि मतलब ये मैं इसलिए आई गॉट अट्रैक्टेड टू बोलेरो.